A very quick, small analysis. It's about the one particular sector. Before going that, people rely on data. People always look data. We should always refer a data. At the same time, we should use our common sense. Say, if I say that uh, one is universal truth, another one is common sense and fact. अब जो भी आप उसके ऊपर बेस कर. So fact can be backed by a research or document, and fact you can also understand from your common sense as well. Not even if it is not backed by some documented evidence. Like sun rises in the east is a universal truth. Now, due to solar eclipse or something, no, if you are having a cloudy weather at a 8 o'clock, it's looking like a 4 o'clock or 3 o'clock of the night. That time also, will you say that it is night, it is not a morning, or you'll use your common sense? Nay, it and in my watch, it is 8 o'clock due to cloudy weather or due to such any other reason. It looks like a 3 or 4 o'clock. So you will use your common sense. You will not rely, no, I need to check some data. Then only I'll believe that it is cloudy. तो वो तो हम लोग का एक्सपीरियंस है, कॉमन सेंस है. जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं वो इंसान ही लेके आते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो. उसको हम लोग प्रूव करते हैं थ्रू अ सर्टेन इक्वेशन. बट डेटा और सर्वे इज नॉट एग्जैक्टली अ इक्वेशन. इट इज अ कलेक्टिव सोर्स ऑफ एविडेंस के हम लोगों को हर मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अ सर्वे इज देयर. साइंटिफिक थिंग्स आर backed by scientific evidence. When you are taking a general survey, it is backed by opinion. So, and sometimes we need to, which even without a scientific evidence, without a survey, you can use your common sense and you can say. Likewise, one sector I'm going to discuss, that is a diagnostic center. So before going to diagnostic center business, which is having a wonderful opportunity, like there is no degrowth at all in this particular sector. Before going to this sector, tell me one thing, that if you are thinking that, okay, no, I want to go and have some idli or pani puri, any of it, two options are there. And in that case, no, in pani puri or idli, you can ask for some little extra chutney or you can ask for some extra pani puri, because you will be the frequent customer. Not only you, but the particular industry is a frequent moving industry, FMCG kind, the consumption based industry. Every day they will put at their stall, every day people will come, so they can play on a volume instead of thinking about small margin. और यहाँ पे आप खुशी से जाते हो. You want to celebrate, you want to have fun on a weekend, so you are going and having a pani puri. And even you ask for a one pani puri, some will ask for one little extra chutney on in idli. So now another point is, you're going with your willingness. I want to go, I want to have something. Diagnostic center, you are not going with at your will. Very hardly few will go. So in diagnostic center is driven by the doctor's prescription. Doctor will prescribe, भाई आपके पास तो like you need to check your sugar level or some ECG कर लो, cholesterol level or some or other regular test. They will refer, then you will rely. ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी जाओगे और एक पानी पूरी और इडली खा जैसे लेते हो वैसे कर लोगे. यू हैव अ ब्रांड इमेज इन माइंड कि नहीं मुझे डॉक्टर लाल पैथ लैब में जाना है, नहीं मुझे एपोलो में जाना है. तो इंडस्ट्री, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नाम एक बहुत बड़ा इमेज होगा आपके माइंड में, बिकॉज यू आर गोइंग विद अ फियर कि मुझे ना अच्छा रिपोर्ट चाहिए. आई वॉन्ट गुड पीपल, गुड इक्विपमेंट, ब्रांडेड, वेयर आई कैन रिलाई. सेकंड, जब आपके पास फियर होगा, जहां पे भी फियर है वहां पे क्या था, वहां पे वॉल्यूम में काम हो रहा था. इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इडली का प्राइस यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है. 50
मतलब 60 छोड़ के 50 में चले जाओ, ऐसा कुछ अलग माइंड में नहीं चलेगा, अनलेस इट इज अ वेरी हैविंग ए यूनिक सम रेसिपी दे आर डूइंग, और आपके आसपास में वो और कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू विल गो। एक ही जगह पे बैठ के कोई 50 एंड 60 में बेच रहा है, उसमें कुछ नहीं है, दे हैव टू प्ले विद अ वॉल्यूम, और थोड़ा बहुत इधर उधर उसका जो रेसिपी मेन्यू वगैरह प्रेजेंटेशन सारी चीज है। सो बट इन दिस केस यू वॉन्ट लुक एट एनी वन, कि वे किसी भी जगह पे जाओ, बट ये तो चॉइस आप कब कर सकते हो, जब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, कि इतने वर्स्ट पॉपुलेशन है और इतना बड़ा कंट्री है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, स्टिल लॉट ऑफ डेवलपमेंट टू बी देयर, मतलब बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और गवर्नमेंट का भी स्पेंडिंग बहुत बड़ा करना चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा स्कोप है हेल्थ इंडस्ट्री में, बिकॉज बहुत जगह पे लोग कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दबा के रख रहे हैं, बिकॉज अगेन दे डोंट नो अनट्रीटेड लॉट ऑफ डिजीजेस आर देयर, सो सर्वे में वो सारी चीज नहीं आता है, बट डिमांड डिमांड इज देयर। नाउ हाउ दिस कंपनीज आर गोइंग टू कैप्चर, पहले क्या होता था, पहले एक राजा जो साउथ में है, उसको नॉर्थ साइड में जाना है, तो नॉर्थ में वो क्या करता था, वो फिर से जाएगा घोड़ा लेके सब कुछ लेके इतना मेहनत करके, उससे अच्छा वो स्ट्रेटेजिक अलायंस करता था, कि चलो उस वहां पे ना गुजरात का एक किंग है, उसका एक लड़की है, उससे शादी कर लेते हैं, तो शादी करने से क्या हो जाएगा, उस किंग को बोलेंगे आसपास के जितने भी सारे स्टेट हैं उसके साथ उसको वॉर में जाने के लिए, और धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे। इस बिजनेस में भी मोट वहीं पे है, एक तो है डर है सबके अंदर, फियर है, डॉक्टर जहां जहां पे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होगा उसी जगह पे डायग्नोस्टिक सेंटर इन हाउस भी हो सकते हैं, बट 100 to 150 अगर नंबर ऑफ बेड्स नहीं है, किसी बड़े हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके पास इन हाउस नहीं होगा, छोटे हॉस्पिटल विल गो फॉर अ रिनाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर। इतना फ्रेगमेंटेड मार्केट है, जैसे गोल्ड सेक्टर में हुआ है हॉलमार्क टू 18-14 कैरेट, से अभी हम लोग हॉलमार्क, तनिष्क, ये सब देखते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी हम लोग इसी तरीके का एक स्केल अप देख सकते हैं, कि छोटे छोटे रीजनल बहुत सारे प्लेयर है, सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर है, एबीसीडी बहुत सारे हैं, कलकत्ता में तो सुरक्षा है, किसी दूसरे जगह पे कुछ दूसरा होगा, बट दे डोंट हैव अ ब्रांड इमेज इन अ मल्टी स्टेट लेवल, एंड few are having very regional level. Dr. Lal Path Lab is having across India. One of the growing company in this particular sector is Vijaya Diagnostic, Krishna Diagnostic, Metropolis, and SRL Unlisted, जो भी जितने बहुत सारे लोग हैं। Now my only point over here, I'm talking about a Vijaya Diagnostic, कि उन्होंने क्या किया है उसका एग्जाम्पल देके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि विजय डायग्नोस्टिक में आप किसी को करना है, क्योंकि इसमें तो कंपटीशन है ही नहीं किसी के साथ किसी का, इतना बड़ा मार्केट है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर है। आप देखोगे कि लाइक जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो क्या सेल करते हैं, इडली एंड पानी पूरी सेल नहीं करता है ना। व्हाट दे आर सेइंग, पैथोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल। अभी पैथोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल में थोड़ा आपका पैथोलॉजिकल जो भी है वो थोड़ा मार्केट शेयर ज्यादा है, रेडियोलॉजिकल वो अगेन आई एम नॉट गोइंग इन अ डेटा, बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस हैविंग अ huge demand, market is unorganized, few organized players are there, and how this Vijay Diagnostic is strategically poised, that I'm going to discuss. They are having a southern part of India having a very strong presence, also they have a presence on a northern part of India. Now वो राजा का भी क्या मैंने एक स्टोरी दिया, आप लोगों को बोला कि स्टोरी में क्या था, राजा को और भी जगह कैप्चर करना था, उसने क्या किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। तो विजय डायग्नोस्टिक में भी क्या किया है, उसके पास तो कस्टमर आ ही जाएंगे, क्योंकि लोग तो बीमार पड़ेंगे ही, लोग तो खाना बाहर खा ही रहे हैं, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री तो फॉर एवर है, सबको कॉमन सेंस से ही आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, हाउ दे विल फेच,
how they will sustain their top line when they are not only focusing on their strength, also they are doing certain changes, strategic alliance. What they have done, एक पुणे के कंपनी है पीएच इंडिया डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, उसको उन लोगों ने स्ट्रैटेजिक अलायंस के मतलब जैसे एक्विजिशन कर लिया 100%। अभी वहां पे अगर जाता घोड़ा लेके, जो एग्जांपल दे रहा था, तो उसको खर्चा भी ज्यादा पड़ता। अभी वहां पे उनको क्या मिल गया कि रिलायबल एक्विजिशन भी हो गया, खरीद भी लिया है, उसका एक कस्टमर बेस भी था, मुझे मार्जिन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और उसका जो भी लॉयल कस्टमर है वो भी हम मुझे मिल जाएगा। ओनली मुझे ब्रांड को डिस्प्ले करना है, और धीरे धीरे ब्रांडिंग को उसी वेस्टर्न साइड में कैप्चर भी करना है धीरे धीरे। तो वेरी गुड स्टेप दे हैव टेकन। ऑल्सो दे हैव डन अ मेडिनोवा बोल के एक कंपनी है, उसके साथ भी उन लोगों ने एक एक्विजिशन किया है। एक्विजिशन में आपका वो मेडिनोवा कंपनी भी मतलब मार्जर हुआ है, सॉरी। तो मार्जर हुआ है 1:21, कुछ शेयर स्वैप हुआ है। तो उससे स्ट्रेटेजिक अलायंस तो मतलब बहुत दूर का कुछ नहीं हुआ है, बट नंबर ऑफ प्रेजेंस इन साउथ दे हैव इंक्रीज। सो दे हैव अ मोर प्रेजेंस। आप क्या करते हो ना, जहाँ पे नजदीक में कोई आपका रिलायबल हो जाए, वो अगर विजय डायग्नोस्टिक सेंटर है और भी प्रेजेंस बढ़ जाता है, तो रिलाई ऑन दैट। सो नम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को मतलब तो इतने बड़ा स्कोप है रूरल में, जितने भी सारे इसी तरीके का स्ट्रेटेजिक अलायंस जो कंपनी कर रहा है इसी सेक्टर में, चाहे वो विजया कर रहा है, चाहे वो कृष्णा डायग्नोस्टिक कर रहा है। कृष्णा शायद मैक्सिमम दे वर्क विद गवर्नमेंट पीपीपी टेंडर वाइज दे वर्क, तो उसको बेनिफिट होगा। अभी विजय डायग्नोस्टिक में अगर फाइनेंशियल में हम लोग आते हैं, तो फर्स्ट क्या है कि बिजनेस समझ में आ रहा है, बिजनेस समझ में आ रहा है। लोग बीमार पड़ेंगे, लोग जाएंगे, क्रिटिकल इलनेस रहेंगे, गवर्नमेंट का फोकस है, और डर है, डर है तो मार्जिन है। यहाँ पे मार्जिन डर के से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप लाइन सस्टेन हो रही है, मतलब आपके पास वो पेशेंट आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो कैसे आ रहा है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आप इंक्रीज कर रहे हो, हाँ कर रहा है। पहले विजय डायग्नोस्टिक के पास अराउंड 95 सेंटर्स थे, अभी शायद 145 सेंटर्स है। पहले 200 के करीब डॉक्टर थे, 250 के करीब डॉक्टर्स है। स्ट्रेटेजिक भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट उन लोगों ने किया है, प्रेजेंस, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस भी वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो yes, these all are very positive factors for this particular company. And if you look at the other part, they have a healthy like a shareholding pattern where promoters are holding a 53.91% stake. So apart from these, no, these particular businesses, you need to look at only one thing here, कि क्या क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है, टॉप लाइन ग्रो कर रही है या नहीं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस स्ट्रेटेजिकली, इफ दे स्प्रेडिंग देयर प्रेजेंस, आर दे ट्राइंग टू कैप्चर, आर दे हैविंग अ मॉडर्न इक्विपमेंट। इट इज अ मतलब पानी पूरी और इडली कोई भी जाके बेच सकता है, बट कोई भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन नहीं कर पाएगा। So it is having a oligopoly kind of a, the few players are having a very strong influence, and whoever will be executing better way, so they'll be capturing the market. Everyone has their own loyal people. So who are going on a Apollo, they will go on Apollo. Who are using at a Lal Path. Now the game is all about no uncovered area. Whoever is capturing rural India, whoever is capturing, how they are going to capture, because all the small hospitals they'll not be having an in-house diagnostic center, as I already said. So these are the sectors where I see, even if any fear or something, no, this kind of a thing, no, one should slowly do a SIP for a very long time. And I feel this is not a recommendation. And since there is no degrowth, and I don't think that they'll be facing any kind of a competition from any other peers. Only here and there, if you look at, everyone is having earning a very good margin. The valuation evaluation in one has to do that, where they want to go, whether they want to go with a Vijaya, whether they want to go with a, see, if you look at no on a one seasonality, I just want to convey that there is a June, April, May, June. That is the due to weather condition. We literally don't get sick that much. So there is always a dip on a June if you follow. And otherwise,
winter season or change in weather, that time, no, we fall sick. So a lot of diagnostics, radiology, pathological tests, like they are having a good third quarter and fourth quarter top line. If you look at last two quarter also, the September season change, so people it's having a high number of like due to their presence or due to the sickness, the high top line. With the expansion in margin, I feel that this kind of four, like if you look at the next two quarter also around 4.5 kind of PPS will come. If that kind of PPS is coming, you can see that plus this additional acquisition margin will also add the revenue part. So it is having a fantastic opportunity for a growth. So in this way, one should actually analyze the industry. What is the mode? What to look at? Here, it is a critical thing where, as disposable income will grow of India, awareness will also increase. People are not aware of. Rural India is not going to a diagnostic center, so it's a no-brainer industry. Still, I'm just giving us few lines so one can understand that how to look at. There is no such a very stiff competition like other industries. So they have their own zone. Only just follow. If you look at any companies who are doing a backward integration or strategic alliance, reducing cost, because this kind of a industry, you're working in a kind of a bicycle wheel. So once one center is there, one center part is there where all spoke are connected and wheel is moving. So center part is the one particular center will be there, Vijay Diagnostic, the main hub, all collecting agent will be there. And the moat is it is any one entry barrier. You need a trained staff. You cannot hire no anyone. You need trained doctors, support staff, technicians, everyone. So NABH, NABL accreditation. Without that, you cannot open a reliable, reputed brand. And brand building will be the one of the main game. And as they spread their point of presence, as you look more point of presence, Dr. Agarwal having a presence in Calcutta, and once they have opened their clinic in Calcutta and all, no, eye problems is a common sense, no. So from there, Dr. Agarwal has like a jump, I think 4x, 5x last 2, 3 years. Same, like whenever you look at, no, see that whether this industry is a cyclical in nature, no cyclical. Any seasonality, little seasonality is there. Like a very only one season is off season, April, May, June. Apart from that, it is having an intact sales, intact growth, how they are growing. Any of the industry you can compare, whether it is a Krishna, Vijaya or anything, and you can think of doing small investment if you really like this industry, not based on my recommendation or anything. I don't do recommend as well. Thank you, everyone.